Hello everyone, welcome back to Vyapaarjagat TV. And as you know that we are promoting Greenpreneur Convention and Awards, and especially this is a very special show that we are running to recognize to promote green entrepreneurs, which is named as Talk with Greenpreneur, or especially AGROTIS presents Talk with Greenpreneur. And so friends, हम लोग we are talking about sustainability, we are talking about renewable energy. हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जो आज का एक बड़ा चैलेंज है, मतलब इट्स अ ग्लोबल चैलेंज, कि जहाँ पे पूरा वर्ल्ड जो है इट इज़ स्ट्रगलिंग फॉर क्लाइमेट, फॉर एनवायरनमेंट। और ये पर्टिकुलर जो सीरीज हम चला रहे हैं वेर वी आर रिकग्नाइजिंग सच एंटरप्रेन्योर्स, कि जो ये पर्टिकुलर ग्लोबल जो चैलेंज है उसको बेहतर करने के लिए दे आर कंट्रीब्यूटिंग थ्रू थ्रू वेरियस वेज। एंड वी आर ऑलवेज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो ये पर्टिकुलर डोमेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। वेर इन टुडे वी हैव किशन करुणाकरण, and he is from Coimbatore, Tamil Nadu, and he is the founder and CEO for the Biofuel. So Kishan, welcome to this particular show. Thanks a lot, Dr. Praveen. Thanks a lot. Nice speaking to you. My pleasure, Kishan. Kishan, we want to know about renewable sources and जो एक green fuel की बात है, and especially when you are driving a marketplace जहाँ पे मतलब you are having lot of people, those who are working towards green fuels. तो किशन ये बताइए, what is your education background and how it was all started? I mean, how Biofuel was started. Right. तो मैं खुद एक बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरर था पहले। तो एक्चुअली मैंने तमिलनाडु का फर्स्ट बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला था, कमर्शियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो इंडिया के टॉप फर्स्ट बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में थे। मैन्युफैक्चर काफी गैप्स था, एज एन इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर को रेगुलर सोर्सिंग ऑफ वेस्ट एक बड़ा प्रॉब्लम था। वो सोर्स राइट प्राइस में डायरेक्ट सोर्सेज से नहीं मिलते थे। अच्छा, और सिमिलरली इवन फॉर सेलिंग फिनिश प्रोडक्ट वो ट्रेडर पे डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि वो फ्यूल कंज्यूमर्स ट्रेडर से बात करके लेते थे, तो उसमें भी ज्यादा प्राइस नहीं मिलता था। सो इसी की वजह से अगर आप देखे होंगे कि बायोफ्यूल्स अभी काफी साल से हैं, फिर भी क्या है कि we've not been able to क्या है कि scale up this thing, right? तो इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत साल से वो बायोफ्यूल सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद जब I had to even shut down my factory, जैसे बहुत से बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरर्स को शट डाउन करना पड़ा उनका फैक्ट्री, तो उसके जैसे मेरे को भी करना पड़ा। सो जब मैं उसके बाद वेस्ट सप्लाई करने लग गया बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई करने लग गया। उस तब तक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी अच्छा हो रहा था। पोस्ट 2014 तो गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दिया प्राइसेस, ऐसे काफी पॉजिटिव मेजर्स भी हो रहे थे। तो हम सप्लाई कर रहे थे ये वेस्ट फॉर बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग, और इंपोर्ट भी कर रहे थे बायोडीजल और बायोफ्यूल्स। तो फिर और तो हमने सोचा कि अच्छा मूव है, अच्छा है, डायरेक्शन इज राइट, क्योंकि अभी इंडिया को ओन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल्स डेवलप करना है, और उन जो वेस्ट इंडिया में जनरेट हो रहे हैं उनको बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करना है, विच इज द राइट डायरेक्शन। तो दैट्स व्हाई वी थॉट कि क्या करें कि जो इस प्लेटफॉर्म और सेक्टर को ही ग्रो करे, कि या तो हम ओन बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग डाल सकते थे, नहीं तो ऐसे एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की तरह थ्रू दैट वी कैन क्या कर सकते हैं कि वो जो सप्लाई का गैप है बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरर्स को और डिमांड का गैप है, वो दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं। मोर एंड मोर वेस्ट बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाए ये कर सकते हैं, और मोर एंड मोर कंज्यूमर्स फॉसिल फ्यूल से बायोफ्यूल्स के मुंह हो जाए, क्योंकि उनको अच्छा प्राइस मिलेगा, रेगुलरिटी में मिलेगा, और डायरेक्ट सोर्स से बेटर प्राइसेस में मिलेगा। तो ये सब वी विल बी एबल टू हैंडल ओनली इफ यू आर ऑन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। दैट इज हाउ द एंटायर आइडिया ऑफ बायोफ्यूल केम। और मैं और मेरे दोस्त वेंकट, सुमंत और प्रसाद इसके बाद में काफी चर्चा कर रहे थे। वेंकट और सुमंत टेक डेवलपर्स थे, उनका ओन टेक का कंपनी था,
तो फिर हमने सोचा कि नो, हम मिलके एक एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ये गैप सॉल्व कर सकते हैं। तो so that is how biofuel actually came into place, and I think with God's grace and everybody's blessing, we're doing a decent job कि more and more waste biofuel manufacturing के लिए जा रहे हैं, और more and more biofuels fuel consumers को मिल रहे हैं. So I think we were able to do more than 12,000 tons, more than 11,000 tons of biofuels and waste in a single month. वाओ, सुपर। सो किशन, ये बताइए कि जो बायोफ्यूल है, ये मतलब जो ग्रीन फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या सोर्सेज होते हैं ग्रीन फ्यूल के? ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिल्कुल। सोर्सेस हैं ये सब हमारे सराउंडिंग में ही है। तो आप आपने भी सुना होगा कि दिल्ली के सराउंडिंग में जो दिल्ली में जो स्मॉग होता है वो उसके स्टबल्स को बर्न करने से होता है। ऐसे ही साउथ में, वेस्ट में, हर जगह पे स्टबल्स बर्निंग होते हैं, वो उस वॉल्यूम में नहीं होते बट हो जाते हैं। और नहीं तो काफी वेस्ट का इंसिनरेशन होता है, नहीं तो डंपिंग हो जाता है। ऐसे काफी ऑर्गेनिक वेस्ट वेस्ट हो जाते हैं। तो ये ग्राउंडनट शेल हो सकता है, सॉडस्ट होता हो सकता है, पैडी स्ट्रॉ हो सकता है, नहीं तो वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरीज के वेस्ट जो टैंक स्लज हैं वो हो सकता है, और जो प्लास्टिक वेस्ट हैं ये भी हो सकते हैं। तो सारे जो वेस्ट हैं हम इनको बर्न करके और एमिशंस बना रहे हैं, नहीं तो इसको डंप करके एमिशंस बना रहे हैं। बट इन्हीं वेस्ट को बायोफ्यूल्स बनाया जा सकता है। तो हम जो बायोफ्यूल्स हैं वो सारे इन्हीं वेस्ट से होता है। तो सारे ये जो सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक वेस्ट के, ग्राउंडनट शेल है, सॉडस्ट है, कैशू शेल है, कॉटन स्टॉक है, सोया हस्क है, नहीं तो इवन इनऑर्गेनिक जो है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, रबर टायर वेस्ट है, ये सब जो वेस्ट हो जाते हैं इनको सब हम बायोफ्यूल की तरह कन्वर्ट करते हैं। ओके। एंड किशन, जब हम बात करते हैं एक मार्केट प्लेस की, तो आपका जो मार्केट प्लेस है उसमें व्हाट आर द काइंड ऑफ सर्विसेज और द व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट पर्टिकुलर प्लेस मार्केट प्लेस इज सर्विंग? व्हाट आर द ऑफरिंग्स यू आर हैविंग? So we offer all types of waste that can be converted into fuel or used as fuel, and we can offer all types of biofuels. So as in बहुत लोगों को मालूम नहीं है, सारे टाइप के फॉसिल फ्यूल्स किसी टाइप के बायोफ्यूल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कोल रिप्लेस हो सकता है बायोमास ब्रिकेट्स या पेलेट्स के साथ, पेटकोक और कोल इवन लूज बायोमास से रिप्लेस हो सकते हैं। डीजल रिप्लेस हो सकता है बायो डीजल से, एलडीओ और एफओ, फर्नेस ऑयल, इंडस्ट्रियल डीजल, ये सब रिप्लेस हो सकते हैं बायो एलडीओ और बायो एफओ से। एलपीजी और सीएनजी रिप्लेस हो सकते हैं बायो सीएनजी से। सारे बायोफ्यूल्स हैं। तो सारे टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स किसी टाइप के बायोफ्यूल्स के से रिप्लेस हो सकता है। तो हम सारे टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स हैंडल कर सकते हैं, और ये बायोफ्यूल सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट से मैन्युफैक्चर होते हैं। कुछ यूज्ड कुकिंग ऑयल से मैन्युफैक्चर होता है, एडिबल ऑयल रिफाइनरी के टैंक्स से मैन्युफैक्चर हो सकता है, नहीं तो सॉडस्ट और ग्राउंडनट शेल से मैन्युफैक्चर हो सकता है। तो हम ये सारे वेस्ट भी ट्रांसैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग प्लास्टिक वेस्ट व्हिच आर जस्ट dumped and emit so much amount of toxins and methane, ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम into efficient fuels। तो हम सारे वेस्ट और सारे टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स हैंडलते हैं। all are these all SKUs, ये सब SKUs हैं हमारे पास। सुपर, सुपर। तो ये किशन, वी स्टिल वांट टू नो मोर कि ये आपका जो मार्केट प्लेस है उसमें, आई मीन, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, हु आर योर नॉर्मल क्लाइंट्स, कौन ये आपके प्लेटफॉर्म से बाय करता है, और मेजोरिटी कौन सी इंडस्ट्रीज में बायोफ्यूल जो है उसका यूज़ होता है? तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत, आपको ये स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी है इन द वर्ल्ड। इंडिया कंज्यूम करता है 1,000 मिलियन टन्स का कोल और 300 मिलियन टन्स का पेट्रो प्रोडक्ट्स। बट इसमें इंटरेस्टिंग है कि 80% ऑफ कोल जो है ये जस्ट 5-6 सेक्टर में ही यूज हो जाते हैं, लाइक जैसे सीमेंट हो, स्टील हो, पेपर हो, टेक्सटाइल हो, पावर हो। सो इन सेक्टर में यूज हो जाता है। सिमिलरली जो लिक्विड फ्यूल हम जो बोलते हैं, जो डीजल है, नहीं तो इंडस्ट्री में जो यूज करने वाला डीजल है, जो इंडस्ट्री में यूज करने वाला फ्यूल ऑयल हो, ये सब आप देखेंगे तो 80% यूज हो ही जाता है कि बस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इंफ्रा सेक्टर में, इंडस्ट्री और पावर एंड एग्री सेक्टर्स। तो ऐसे 5-6 सेक्टर्स हमारे कंज्यूमर्स बनते हैं, आर बिकमिंग आर बायर्स हु बाय दिस टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स। तो ये हमारा एक टारगेट क्लाइंटेल है।
सिमिलरली जो भी सारे बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, जो भी किसी भी टाइप का बायोफ्यूल का मैन्युफैक्चरिंग हो, ये भी हमारे प्लेटफॉर्म में बायर भी बन सकते हैं, सेलर भी बन सकते हैं, क्योंकि ये वेस्ट बाई कर सकते हैं और बायोफ्यूल सेल कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है जो वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट जनरेट करते हैं, जैसे ग्राउंडनट शेल हो, नहीं तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के जो वेस्ट हो, नहीं तो कैश्यू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कैश्यू शेल डेवलप करता है। तो जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं और टिम्बर इंडस्ट्रीज हैं, ये भी हमारे यूजर्स हैं, ये क्योंकि ये वेस्ट सेल कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म। सुपर। तो ये जैसे एक नॉर्मल एक कोई मार्केट प्लेस होता है, तो नॉर्मली ये होता है कि मार्केट प्लेस पे लोग आते हैं अपने हिसाब से बाय करते हैं। और आपने बताया कि यू आर ऑल्सो हैविंग अ वेंडर पोर्टल या मतलब वेंडर फैसिलिटीज, जहाँ पे किसी को एज अ मर्चेंट अगर खुद की प्रोडक्ट्स जो है वो बेचनी है तो दे कैन ऑल्सो सेल। तो आपके आपके प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मतलब ये थ्रू योर मार्केट प्लेस ही होता है, या यू हैव सम अदर कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजीज ऑल्सो जो आप कस्टम कोड्स वगैरह बेच के डेफिनेटली ये करते हो? जो है हाँ। ट्रांसैक्शन हम प्लेटफॉर्म के थ्रू पुश करते हैं, ओके। और जो टेक्नोलॉजी है वो इट हेल्प्स अस एक्वायर मोर एंड मोर सेलर्स एंड बायर्स। बट हाँ, look, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था अब तक, हम्म। बहुत से लोगों का ये पहला एडॉप्शन टू टेक्नोलॉजी है, तो हमारा फीट ऑन स्ट्रीट और हमारा स्ट्रीट में जो फील्ड में है टीम जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे कीप रेगुलर कनेक्ट विद सेलर्स, they regular connect with buyers to ensure that the transaction is happening through the platform, and ensure that their requirements are correctly met as per the quality, क्योंकि हमारा काफी एनएबीएल लेबोरेटरीज के साथ टाई अप है अक्रॉस इंडिया है। तो जो भी बायोफ्यूल्स और वेस्ट है वो बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिटी एश्योरेंस भी हम अरेंज करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म पूरा डिजिटाइजेशन होता है, तो राइट्स फ्रॉम इंक्वायरी अप टू डोर स्टेप डिलीवरी पूरा आपको जैसे अमेजोन में होता है उससे पूरा ये होता है। तो इसकी वजह से बायर्स एंड सेलर्स बेनिफिट आउट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो इनिशियली थोड़ा नज और पुश हमारा फीट ऑन स्ट्रीट और फील्ड टीम से होता है, बट ट्रांसैक्शन जो है वो प्लेटफॉर्म में। सुपर। सुपर। और किशन, वी ऑल्सो वांट टू नो दैट ये आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, सो यू आर मेनली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एज फार एज वी टॉक अबाउट द एनवायरमेंट और द सस्टेनेबिलिटी, सो व्हाट इज योर लार्जर गोल फॉर द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट? एक्सलेंट एक्सलेंट, तो यही पॉइंट है। तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे बहुत से ग्रीन फ्यूल्स हैं, सोलर है, विंड है, सारे हैं, बट वी स्ट्रांगली बिलीव जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो इंडिया को नेट जीरो एमिशंस के डायरेक्शन में पुश कर सकता है, वो बायोफ्यूल्स है। क्योंकि जो बायोफ्यूल्स यूज करते हैं तब एमिशंस होता है, बट क्या है, ये क्रॉप्स और वेस्ट जो डेवलप होते हैं उसके जब उसके ग्रोथ फेज में एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। सो एक्चुअली जो है नेट जीरो, सो नेट अगर लाइफ साइकिल एमिशंस देखें तो बेस्ट जो है वो बायोफ्यूल्स ही रहेगा, क्योंकि जो भी एमिशंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो उसके प्रोडक्शन में ऑलरेडी एब्जॉर्ब होता है किसी टाइप में। तो सो हमारा गोल ये है कि मोर एंड मोर कंपनीज जो है एटलीस्ट इंडिया का जो फॉसिल जो वेस्ट है इंडिया में, वो ऑलरेडी इंडिया के 50 to 60% ऑफ फ्यूल कंजम्पशन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 10% ऑफ दैट गेट्स कन्वर्टेड टू बायोफ्यूल्स कंप्लीटली, एंड उसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, मोर देन 5% हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हो। आई थिंक द आइडिया इज टू एंश्योर मोर एंड मोर फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बायोफ्यूल्स हो जाए, और ताकि नेट जो है जो इंडिया को हो या अर्थ को, the net life cycle carbon dioxide emissions become more towards zero. और जो से आप, I think Prime Minister also has said a goal towards net zero emissions. तो आई थिंक वर्ल्ड ओवर यही गोल होना चाहिए कि थोड़ा पॉजिटिव एमिशंस हो जाए, वो दैट इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि थोड़ा भी पॉजिटिव एमिशंस नहीं होना चाहिए। आई थिंक नेट वी शुड हैव नेगेटिव नेट एमिशंस, एमिशंस कम होने चाहिए एज अ सोसाइटी हमारे। वी शुड मूव टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशंस एज अ सोसाइटी। तो उसके लिए हमारा ये है कि बायोफ्यूल इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड मोर एंड मोर फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन शुड बी कन्वर्टेड टू बायोफ्यूल्स। सुपर। सुपर। किशन, वी ऑल्सो और वांट टू नो। इस डायरेक्शन में हम ऑल्सो यस। सस्टेन हमारे, हाँ सॉरी, नो, प्लीज कंटिन्यू। तो हमारे सस्टेनेबिलिटी पार्टनर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमारे कंज्यूमर्स को ये इवेल्युएट भी करके दिखा रहे हैं कि कितना एमिशन रिडक्शन हो रहा है उनका, और उसको कैसे कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट्स का बेनिफिट उनको मिल सकता है, इस डायरेक्शन में। Super. So, Kishan, I'm sure when you are having this particular startup, आप ये एक अलग विजन से काम कर रहे हो. You have taken a large
vision ki jahan pe you are contributing towards the sustainable development. So, Kishan, we want to know more about the challenges which you are facing or challenges you are having in this particular domain. So, and how do you tackle or how do you manage those challenges? So challenges actually one thing is sector में रहा हूँ मैं almost 14 years से इस sector में हूँ तो इसके gaps और ये first hand मालूम है challenges क्या है इसमें I've faced faced through these challenges first hand तो ये एक plus था that helps us understand these challenges earlier तो challenges क्योंकि traders के काफी syndicates और traders बीच में हैं तो उन सब का market disturb होता है जब हम अच्छे प्राइस में सेलर से लेते हैं और अच्छे प्राइस में बायर्स को देते हैं तो उनका एक इफेक्ट होता है उनका एक्शंस होता है तो दीज आर ऑल चैलेंजेस वी आर रेडी टू फेस क्योंकि हम एक स्टेटस को डिस्टर्ब कर रहे हैं और एनवायरनमेंट और ऑन अ होल बायोफ्यूल्स और ग्रीन फ्यूल्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें ये चैलेंजेस होंगे जो स्टेटस को में हैं और जो फॉसिल फ्यूल्स के लार्ज ट्रेडर्स हैं ये सब थोड़ा दे विल क्रिएट ट्रबल्स एंड दे विल क्रिएट इम्पैक्ट ये हमको बहुत स्मूथली रिजॉल्व करना है एट अ स्ट्रेच इसको वी आर द वी कैन टेक ऑन एवरीबॉडी ऐसे कॉन्फिडेंस से नहीं ले सकते उनको एक नैक से हैंडल करके उसको लेके जाना है दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस दूसरा तो ये है कि सेलर्स और जो वेस्ट रिसोर्सेस हैं इंडिया के वो बहुत स्प्रेड है क्योंकि फार्मिंग बहुत स्प्रेड है इंडिया में बहुत फ्रैगमेंटेड है बहुत स्मॉल स्केल है तो इसको एग्रीगेट करके लेके जाना टुवर्ड्स लार्ज फ्यूल कंज्यूमर्स एंड बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरर्स ये एक दिस इज पॉसिबल ओनली विद द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्योंकि फीट ऑन स्ट्रीट डालेंगे तो हमको इतने लोग चाहिए क्योंकि स्टेट में हम 100 लोग ऐसे नहीं डालना चाहते we have to be restricted in putting the number of people the rest of the work the technology platform has to reach तो इसके लिए हम इन्फ्लुएंसर्स को के साथ काम करना है जो किसी और एंगल में एग्रो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है उनके सहायता से उनके हेल्प से वी हैव टू रीच द लार्जर बेस और उसको डेमोक्रेटाइज करना सुपर सुपर किशन आपने बताया कि आप यू डू नॉट वांट टू फॉल इनटू सिचुएशन वेर इन जहाँ पे बहुत सारे जो है वो एंटरप्रेन्योर मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज आपको एक्वायर करने पड़े सो वेर इन माई क्वेश्चन टू यू इज currently what is your the culture ki jahan pe how do you manage team and what is the culture you are having as far as employees or your team or colleagues are concerned? I think one thing is we have a team of just 30 we handle Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala with this term of 30 I will not say we are very low on manpower but we are not very manpower intensive we've not gone to this extent कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2-10 लोग डालें 5 लोग डालें but that's not the culture with which we want because I can tell you very confidently कि जो हमारे पहले एम्प्लॉय हैं वो अभी भी हमारे साथ हैं तो हम वो हायर ऑन फायर में ज्यादा we don't believe we believe in hiring the right type of people and the right number of people और उसके हिसाब से the technology and the platform will do the rest of it in gathering more and more people onto the platform and ensure that we are able to source from more and more waste get converted into biofuels but इसके लिए एक कल्चर हमने ये रखा है कि as much as possible हमारे सारे people very passionate about environment है very passionate about sustainability है I think वो passion बहुत important है सेक्टर में because that helps you to do more than what in a normal sales or normal sourcing you will do तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर हमने रखा है दूसरा हमने ये कल्चर रखा है बहुत आई थिंक वी आर अ वेरी थिन टीम अभी भी 30-34 is not much of a team I think we are a very thin team we have a very accessible leadership but we have a team with 50 plus years of experience in biofuels and wastes with more than 70 plus years of experience in B2B sales so we've created a strong team that can take that kind of vision forward but at the same time we don't want to be hiring a lot of people just for the sake of hiring. Super. No, that's a it's a great thing to maintain the right asset as far as the team is concerned. Bilkul Kishan. So Kishan, we have talked about your venture. We have talked about the sustainability. Now I have a couple of questions about you. Wherein my next question to you is, can you list? I mean, can you list 3 such your personality traits that best describe you? So I think one thing that best describes me is
I think I see problems as opportunities or challenges as opportunities. I think that's a very, I think that's one part. So I would say more out of necessity, because when I set up my first biodiesel plant, there were only challenges all around. There were only challenges. Started with Jatropha cultivation, uh, and then moved on to biofuel manufacturing, then moved on to second generation biofuel technology, and then faced multiple crude crashes. So challenges and opportunities, not challenges and problems will never stop coming. I think as an entrepreneur, I think that's been one of the key factors that's driven me, where I've been able to see these as opportunities and work on those as opportunities rather than challenges. Um, to I think second trait that I think this describes me is I think I'm a very patient listener. Many people feel I can listen for a very long time and understand the situation and then come with my views and opinions. I don't jump to opinions and views pretty fast. Uh, so I take time to gather, understand what's happening around me, understand what people are saying, and then evaluate based on that, and then make my opinions and act according to it. That's the second trait that describes me. So many people have felt I'm an extremely patient person, both personally and officially. So that's the second trait that describes me. I think third is, I'm a very spiritual person. So I think spirituality has been a very core aspect of the way I've gone through my business. Rather than I very strongly believe in this one sentence, two sentences of Bhagavad Gita, which says, "Change is the only thing that's constant in life, and whatever happens, that is what is good." So there is definition of good can be nothing other than what is reality. So I think those three things kind of define me. Super, super. And Kishan, so now my next question to you is, what are your personal goals? I think personal goals is, yeah, I think as I said, we want to be, I think we want to be developing biofuel to such an extent that we're able to replace 5% of India's fossil fuels into biofuels through our platform. I think that's the first goal that we have. I don't believe in putting very long-term, huge goals, but this by itself is a very challenging goal, because 5% of India's fuel consumption is close to 65 to 70 million tons of biofuels. If we're able to reach there, that by itself is a tremendously daunting task. I think that's one goal that we have, that we reach there, and we reach there by steps. So one of the steps is to reach first 1% of India's fossil fuel consumption with biofuel within 5 years. So that's one important goal that we're driving. Two, yeah, I think we want to ensure that all waste developed within India are used within India into either converting into fuels or some value-added product in such a way that India becomes an example for the whole world in terms of one, um, uh, handling wastes and converting them into fuels, and two, moving to green fuels away from fossil fuels. I think India has the opportunity and potential, which are very rare or potential and opportunity, because India is also the third largest consumer of energy and the third largest producer of wastes. So not many countries can have that kind of potential. More and more waste, almost all wastes in India to be converted and value added within India and be used within India. I think that's another goal toward which we are working. I think these are the two primary goals across which we are working. Yeah, I think, and the third would be, as I always say, if we live in a greener earth than we were born in, if the world has become a better place than what we were born in, I think that's a very important goal to me. Every day, I think we can make a difference to that, and I think, yeah, that'll be one of the goals that I'll work with. Super. And so now, Kishan, my next question to you is, how do you spend your time outside work? जब आप काम नहीं करते हो, when you are not in the office, तो आप आपका टाइम कहाँ पे spend करते हो? Well, I think mostly I spend my time with my son family. Yeah, I think that's the primary place where I spend my time outside work. I think already spend much lesser time than I should actually with my family and my son. My wife works. And wife works abroad predominantly. So a lot of
also being to be handling the aspects of my son individually also takes a lot of time, I think. So I don't have any time beyond both of this. Understood. So, so being a leader, being the entrepreneur, again, especially when you are doing something which is again extraordinary, like what you are running as a biofuel. So, we want to know that what is something which you are learning right now. I think one thing that I'm very closely trying to learn personally is to understand the carbon markets and Hmm. understand how the emission reductions thing works totally, how that can be how that can benefit the farmer or the biofuel manufacturer or the consumer. That's something that I'm very closely learning more about. Another thing I think learning is a continuous process. I think another thing that I'm learning is about the newer generation. I think I work with a much younger team. So even my co-founding team is much younger than me, and our average age of our team is also much younger. So working with a young team is something that I'm learning on a daily basis because I'm slightly older than most of them. So yeah, I think that's another thing that I'm continuously learning. So these two are my primary learning interests currently. Super. So you said about the X generation or the millennials, right? So, what Hello. message? Yeah, Kishan, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. So, as you have said that, you are learning about the millennials and, their mindset, their expectations, their thought process. So now my next question to you is for them only. I mean, what message do you want to convey, especially to the millennials or the young entrepreneurs or the startups? Actually, the message that I can give is very positive. I think I'm very impressed by the millennials. क्योंकि अगर हमने देखा है क्योंकि मैं I had this my manufacturing unit almost 14 years back, 14 15 years back. तब से मैं I've been in biofuels. But अब जो है जब जैसे मैंने ज्यादा millennials decision makers बनते हैं, as they become more CEOs, sustainability heads, chairman companies, both family and outside family run businesses. मैं देख रहा हूँ कि they are deciding in the favor of environment. इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनके डिसीजन मेकिंग में. जिस जनरेशन से मैं आता हूँ वहां पे प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि बायो ग्रीन हो, अच्छा हो, एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो, फाइनली प्राइस इंपॉर्टेंट है. बट अभी के जनरेशन में वो ऐसा नहीं. They're willing to accept environment as a very important aspect of decision making. और ये बहुत important है कि for the benefit of the environment and for the benefit of all types of green fuels and renewable energy. और I think I'm very very impressed and excited to be a part of this generation and working with this generation. जो and my message is to keep that up. I think always keep important environment as a very important factor of the decision making. आई थिंक वो हमने बहुत जनरेशन से नहीं किया. उसका ही जो है उसका मिस्टेक हम अभी बेयर कर रहे हैं. जो हम देख रहे हैं एनवायरमेंट ऑफ केरला, एनवायरमेंट ऑफ दिल्ली, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली में और प्रो द वर्ल्ड, तो वो दैट इज अ रिजल्ट बिकॉज हमने एनवायरमेंट को कहीं ऐसा फैक्टर ही नहीं कर सकते हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. और ये जनरेशन मिलेनियल्स उसको कर रहे हैं, तो आई थिंक आई वांट देम टू कीप इट अप. They are risk takers, and I think they are, especially in India, I think they are a generation who believe that they are strong enough in the world. That's a great confidence to have. I think they should keep it up. Absolutely, absolutely. Very well said, Kishan. So, Kishan, yeah, it was great talking to you, and thank you so much for taking out your time from your busy schedule and joining this particular talk show. And I'm sure My pleasure, the. my pleasure, my pleasure, Dr. Praveen. Thank you so much. Thank you so much, Sure, Kishan. we'll be in touch with you. It's great to be speaking to you. Great to be My speaking pleasure, my to you. pleasure. Like, Thank you so much. And so everyone, as you have seen that we have Kishan in this particular talk show, and likewise we are talking with more such green entrepreneurs, those who are contributing towards sustainability, those who are working to make the world better, and those who are thinking about the planet, thinking about the environment. So we are featuring out such entrepreneurs, and if you have anyone who is doing such practice, so please do connect them with us. You can simply comment their name and number in this particular video's comment box, and we will reach out to them and we will invite them to this particular show. So thank you so much, everyone, for joining this particular show.
and looking forward to your participation again at the Greenpreneur Convention and Awards, and especially the show which we are running at this particular time. So keep watching and stay tuned. Thank you so much. सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दें, कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, विश्वास दें। जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, हर व्यापार को दे पहचान।